Today we'll be reading about midbrain. Midbrain is derived from mesencephalon, part of neural tube. It's a very small structure when seen grossly. It is present in between the diencephalon and pons. Clear? Measuring approximately 2 cm in length. This purplish part is the midbrain. See? On the ventral view, we are able to see these structures. It is called crus cerebri. See? Crus cerebri extends from thalamus to pons in a V-shaped manner. See? In a V-shaped manner. ठीक है? Crus cerebri is also called as basis pedunculi because when viewed in section, this midbrain, it is made up of 2 cerebral peduncle and the dorsal part is made up of swellings, 4 swellings, 2 superior colliculus and 2 inferior colliculus. So this अभी जो हम देख रहे हैं ventral aspect में, this part, this is called crus cerebri or basis pedunculi, मतलब cerebral peduncle का basal हिस्सा. What else on ventral view? On ventral view, the space between 2 crus cerebri, this part, it is called interpeduncular fossa. In interpeduncular fossa, there is posterior perforated substance and these 2 swellings, they are called mammillary bodies. Don't confuse with the swelling on the dorsal aspect. These round swellings are present on the ventral aspect and dorsal aspect. On the dorsal aspect, there are 4 swellings. On ventral aspect, here there are 2 swellings. They are called mammillary bodies because of resemblance to the mammary gland. Okay? This cut part is the cut part of the infundibulum and cranial to that is optic chiasma. This is posterior perforated substance. It is perforated by the deep branches of circle of Willis. We are able to see nerves on the ventral aspect. On the medial part of crus cerebri, this nerve emerging from interpeduncular fossa. It appears to be emerging from interpeduncular fossa on the medial aspect of crus cerebri. This is oculomotor nerve. It emerges between 2 arteries. कौन सी arteries? यहाँ basilar artery divides to form posterior cerebral artery and उसके ऊपर कौन सी होती है? Superior cerebellar artery. Remember these 2 arteries because this is third cranial nerve which appears from the medial aspect and from the dorsal aspect ये जो nerve झांक रही है side से, lateral side से, this is the trochlear nerve. These both nerves, they are located in between the posterior cerebral artery and superior cerebellar artery. Why we have to remember that? Because in case of any anomaly of this artery, these nerves may be compressed. Okay? On the dorsal view, we are able to see 4 swellings, superior colliculus and inferior colliculus. Okay? Superior colliculus is just below this. One more swelling appears. इसको क्या कहते हैं? Pineal gland. Superior colliculus is just below the pineal gland. Pineal gland is normally in midline. Okay? On the lateral aspect of superior colliculus, here इसमें दिखा नहीं रखा है, पर you are able to see just on the lateral aspect medial geniculate bodies and or more laterally there is laterogeniculate body. They are technically part of thalamus or they are also called as metathalamus. Okay? So superior colliculus and inferior colliculus. In superior colliculus के बीच में superiorly there is midline gland called pineal gland which is responsible for the secretion of melatonin. ठीक है? Grossly we are able to see this nerve. Okay? ये nerve जो यहाँ से झांक रही थी, ये dorsally appear होती है. This is trochlear nerve. See, trochlear nerve is an exception क्यों है? See,
ये देखो, ये वेंट्रल व्यू में पूरे ब्रेन स्टेम को देखो. ऑल ऑफ द क्रेनियल नर्व्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. बट दिस नर्व, कौन सी नर्व? ट्रोक्लियर नर्व seems to arise from the dorsal aspect of the brain stem. This is one point, number one. Second point, specific, matlab if somebody asks you about the specificity of the trochlear nerve, second point is, this is the smallest cranial nerve. किताब में लिखा है क्या? Smallest cranial nerve. Smallest means it contains less number of axons, so we can call it that it is the thinnest. It is the smallest cranial nerve. Largest cranial nerve is? So why it is large? Because it contains large number of axons, and trochlear nerve it contains lesser number of axons, so it is thinner and it is called smallest. ठीक है? तो पहला point, it appears from the dorsal aspect of the brain stem. ये only exception है because other cranial nerves they appear from the ventral aspect. Second, it is the smallest cranial nerve. And third, we will see in the section, अभी देख लेते हैं, ये देखो, इस section ये downloaded है सारी images Google से. इस सेक्शन में थोड़ा सा हम इधर थोड़ा सा देखो क्या होता है. ट्रोक्लियर नर्व जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से अराइज होती है तो क्या करती है, राइट साइड वाली लेफ्ट चली जाती है और लेफ्ट साइड वाली राइट चली जाती है. और ये जो क्रॉसिंग या डिकसेशन होता है ये मिड ब्रेन में निकलने के पहले होता है, इनसाइड द सब्सटेंस ऑफ द, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिकसेशन. ठीक. सो थर्ड फीचर अबाउट, स्पेसिफिक फीचर अबाउट द ट्रोक्लियर नर्व इज दैट it crosses within the substance of the midbrain. So it has internal decussation, internal crossing. And ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अभी डोर्सल व्यू भी देख लेते हैं. चलो डोर्सल व्यू में हमको ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज सुपीरियर. देयर आर 3 cerebellar peduncle, isn't it? Cerebral peduncle is only one, cerebral peduncle, that's it. But there are 3 cerebellar peduncle: superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle or inferior cerebellar peduncle. Midbrain connects to the cerebellum by superior cerebellar peduncle. So this structure is the superior cerebellar peduncle. And ये जो पूरा कट हो रखा है, this is fourth ventricle. And fourth ventricle का roof is formed by, in the upper part, dorsally, by the superior medullary velum. So this trochlear nerve is piercing the superior medullary velum. ठीक. Superior colliculus, what is superior colliculus? This structure, this part of the midbrain, it is connected to the lateral geniculate body and it is responsible for the general visual reflex. Not vision. Vision is okay, it is related to vision, but which part of vision? Visual reflex. So superior colliculus is related to general visual reflex, and the inferior colliculus, it is related to auditory reflex, hearing reflex. ठीक, reflex. एक लाइन और लिख लो. What about the pupillary reflex? There is one more reflex. General reflex तो इससे रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई बॉल वो तो इससे कंट्रोल हो रहा है. प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, जो इसमें नहीं है, मिड ब्रेन के थोड़ा ऊपर होता है, मिड ब्रेन और डायनकेफेलॉन के बीच में. दैट इज द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. इसको हैशटैग कर लो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. ओके, चलो नाउ वी विल सी द सेक्शंस. Sections are taken in order to study the internal anatomy of the brainstem and in order to predict the involvement of brainstem according to the symptom of the patient, that is brainstem syndromes. ठीक है? Conveniently, sections are taken at two levels: superior colliculus and inferior colliculus. This is the section at level of superior colliculus. Yeah? You may draw also. You may draw this section. At the level of the superior colliculus, we are able to see this is एक तो cavity. पहले तो देख लेते हैं इसमें gray matter कौन कौन सा है. This cavity is the cerebral aqueduct, and around the cerebral aqueduct, the gray matter is called as, because it is around the cerebral aqueduct, it is called as periaqueductal gray matter. Okay.
तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर is the component of which part of brain stem? Midbrain. Because cerebral aqueduct is present in the midbrain, so periaqueductal gray matter कहाँ होना चाहिए? Midbrain में होना चाहिए. और जब कोई पूछे कि midbrain में जो periaqueductal gray matter है उसमें जो न्यूक्लियाई है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वही न्यूक्लियाई होंगे जो कि मिडब्रेन में होते हैं. और मिडब्रेन में कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस होते हैं? एक तो थर्ड नर्व न्यूक्लियस, एक फोर्थ नर्व न्यूक्लियस और एक और है मीजेंसिफेलिक. वर्ड आ गया मीजेंसिफेलिक. अगर किसी भी ट्राइजेमिनल नर्व का वो न्यूक्लियस जो मीजेंसिफेलन तक जा रहा है. सो हमारे पेरिएक्विडक्टल ग्रे मैटर का कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो ये वाला ऑक्यूलोमोटर नर्व. देखो ध्यान से, ऑक्यूलोमोटर नर्व सी इट्स नॉट वन न्यूक्लियस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. Oculomotor nucleus is present on the ventral part of periaqueductal gray matter, है ना? And the dorsal most part of oculomotor nuclear complex is called Edinger-Westphal nucleus. ठीक? The fibers from Edinger-Westphal nucleus also intermingle with the fibers of the oculomotor nerve. Okay? And this oculomotor nerve, which is also containing the fibers from the Edinger-Westphal nucleus, see, it exits in this manner. This is the dorsal part, this is the ventral part. Oculomotor nerve से ये रही nerve निकली. It crosses, it traverses this nucleus, red nucleus. ठीक है. इतना लाल नहीं होता, ये डायग्राम में बना है. ठीक है. क्यों लाल होता है वो आपका होमवर्क है. Why it is called red nucleus? इतना पता है कि ये सेक्शन में काफी बड़ा दिखता है, मटर के साइज ऑफ अ पी, मटर के दाने की जितना. सो दिस ऑक्यूलोमोटर नर्व इट traverses through the red nucleus and now it appears on the medial aspect of the crus cerebri from the ventral aspect of the brainstem on both the sides. There is no crossing here. ठीक. The dorsal part of oculomotor nuclear complex is called Edinger-Westphal nucleus. So oculomotor nerve contains motor fibers to the extraocular muscles as well as the peripheral parasympathetic fibers for the ciliary ganglion, which will supply later on to the sphincter pupillae and ciliary muscles. Edinger-Westphal nucleus के fibers कहाँ जाते हैं? They will relay in the ciliary ganglion and post-ganglionic fibers they will supply ciliary body and sphincter pupillary muscles. And another nucleus in the periaqueductal gray matter is this nucleus, mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. This nucleus is also very specific. हम क्लास में ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. This nucleus is specific because it contains first order neurons, the only sensory nucleus to contain the first order neurons directly inside the brain. ब्रेन के अंदर ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर it contains the first order neurons. दूसरा, it carries the proprioceptive fibers. From where? From the face. Face को कैसे याद रखेंगे? From orbit, eyeball, from the muscles of mastication, from the facial muscles, and from the muscles of the tongue. Muscles of the tongue, they are supplied by which nerve? Muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve, but the proprioceptive sensation will be taken by the trigeminal nerve. To which nucleus? Mesencephalic nucleus. Muscles of the face are supplied by which nerve? Facial nerve. But the proprioceptive sensation will be taken from the trigeminal के mesencephalic fibers. Muscles of the eyeball, they are supplied by third, fourth, sixth, है ना? But the proprioceptive sensation will be taken by, है ना? Muscles of the mastication, they are supplied by which nerve? Mandibular nerve. But the proprioceptive sensation will be taken by. ठीक है. तो अलग अलग पढ़ने से एक ही जगह याद कर लो. ठीक है. What else outside the periaqueductal gray matter? We are able to see this large nucleus, red nucleus, and from the red nucleus the fibers. ये दिख रहा है? ये decussation है, rubrospinal. Decussation of the rubrospinal tract. We are able to see at the level of superior colliculus. Now, red nucleus का काम क्या है? ये जो rubrospinal tract है, this forms the extra pyramidal system. बस इसको याद कर लो. Extra pyramidal system.
वी आर एबल टू सी पिरामिडल सिस्टम ऑल्सो. कौन सा? ये क्रस सेरिब्राई वाला. उसमें कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर. ठीक है. तो द फाइबर्स विच पास फ्रॉम द पिरामिड, that is the corticospinal fibers, they form the pyramidal system, and extra pyramidal is formed by here. यहाँ पे दिख रहा है कौन? रूब्रोस्पाइनल. उसके भी क्रॉसिंग हो जाती है. यहाँ पे देखो डिकसेशन हो जाता है. और क्या दिखता है हमको? ये substantia nigra. Now substantia nigra is functionally associated with the basal nuclei. ठीक है, but it is present in the midbrain. The cells of substantia nigra is responsible for dopamine. ठीक है, it is responsible for dopamine. It is connected to the corpus striatum through nigrostriated pathway. And what will happen if substantia nigra is affected? मान लो अभी सिंड्रोम जैसे बात, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? सोना नहीं है, उड़ जाओ. देखो तेरी तरफ कर दूं कैमरा, सीधे बैठ. मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस दिख रहा है. क्या करता है? एमएलएफ या एमएलबी? रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ, मतलब ये कनेक्ट करता है oculomotor and trochlear, वो सारी nerves को with the spinal accessory nerve, that is reflex movement of the head and neck towards the source of light and sound. So it is because of this medial longitudinal bundle, which is the bundle of white fibers. What else we are seeing in the tegmental part? Lemnisci. In the superior part there is spinal medial lemniscus most medially. इसमें इन्होंने कंबाइंड दिखा रखा है. सबसे मीडियली होगा मीडियल लेमनिस्कस, देन ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, देन स्पाइनल लेमनिस्कस. बस लेटरल लेमनिस्कस विल अपीयर इन द इंफीरियर सेक्शन. वेरी गुड. तो इंफीरियर सेक्शन में क्या है वो देख लेते हैं. एक तो इसका पेक्यूलर फीचर है, पेरिएक्विडक्टल ग्रे मैटर में जो ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस है उससे अराइज करती है ट्रोक्लियर नर्व. सी oculomotor nerve was moving ventrally, but the trochlear nerve it moves dorsally, crosses the midline and appears from the dorsal aspect. ठीक है, through the superior medullary vellum. Now this feature is important here. Decussation of the superior cerebellar peduncle. तो पहला peculiar feature जो अलग है from the superior section is the presence of trochlear nucleus. बाकी सब सेम है. देखो mesencephalic nucleus तो पूरे में ही रहेगा ना, पूरे मिड ब्रेन में. तो पहला फीचर ये हमारा ट्रोक्लियर न्यूक्लियस. दूसरा क्रॉसिंग ऑफ द सेरिबेलर पेडंकल्स. ठीक है, दैट इज डिकसेशन ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ऑब्वियसली मिड ब्रेन है तो कौन सा पेडंकल होगा? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का ही तो क्रॉसिंग होगा. And this is inferior colliculus because we have taken the section at the level of inferior colliculus. In lemniscus there will be medial lemniscus, spinal lemniscus, trigeminal lemniscus and lateral lemniscus. Rest of the features they are same. Lateral lemniscus is concerned with the hearing pathway. Cerebellar peduncles, agar they get affected in any cerebellar in any midbrain syndrome, what will happen? What will be the? There will be very good ataxia. If it is because of the cerebellar involvement, it is called as cerebellar ataxia. ठीक है. Now on the basis of above two section, can you predict if if the artery, अच्छा what artery will be here? कौन सी आर्टरी रहेगी मिड ब्रेन के पास? यहाँ पे ऐसे करके जाएगी. कौन सी? और हमने बताया ना थर्ड नर्व इज पासिंग बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर. इफ दैट सपोज दैट आर्टरी इज इन्वॉल्व इन एनी पैथोलॉजी, इन एनी इनफार्क्ट, सपोज इन एनी पैथोलॉजी, अगर कोई ब्रेन का मिड ब्रेन का ये सपोज ये एरिया इन्फार्क्ट हो गया तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएगा बताओ? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड नर्व देयर विल बी हाँ बोलो. थर्ड नर्व किसको सप्लाई करता है? आई बॉल को ना. विच मसल्स ऑफ द आई बॉल?
मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक, बस, है ना. और third nerve also carries fibers from the addenture Westphal nucleus for the pupillary constrictor and the ciliaris muscle. So all those function will be lost. But ये बताओ, it will be lost whether ipsilaterally or contralaterally? Ipsilaterally, very good. And if crus cerebri, दूसरा ये crus cerebri का ये वाला part गया हुआ है, ठीक है. Crus cerebri contains the corticospinal fibers, ठीक है. But that corticospinal tract will later on medulla oblongata में it will cross by at the level of pyramidal decussation. So what kind of what symptom will be there because of the involvement of crus cerebri? Contralateral, very good. Contralateral hemiplegia या hemiparesis, very good. So अच्छा, इसमें भी बता दो क्या होगा. If suppose I am not taking the name of syndrome because I want you to फर्स्ट अंडरस्टैंड द एनाटॉमी. नेमिंग तो बाद में हो जाएगा. इसको वेबर कहते हैं, उसको बेनेडिक्ट कहते हैं, पेरिनोड्स है, क्लॉडेज है, वो नहीं. पॉइंट ये है कि सेक्शन के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करना सीखो, ठीक है. सपोज ये है थर्ड नर्व, ये है रेड न्यूक्लियस. अब बताइए इसमें क्या होगा. वेरी गुड. रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज द एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे, ठीक है. और थर्ड नर्व न्यूक्लियस है तो इप्सिलेटरल ऑप्थेल्मोप्लीजिया. So this was the basic about the midbrain. Okay, thank you.